So this is completed ना बेटे. Now what was left? Balance sheet. क्या रह गया था बाकी? Balance sheet. Now see, already we have discussed all the things about balance sheet कि क्या क्या आएगा. Once you have a look on screen, first of all we have to write creditors. पहले हम लोग अच्छा ये चीज बताइए मुझे, कोई भी एक बच्चा बता दे बैलेंस शीट में कौन कौन सी साइड्स होती हैं, कोई बता देगा कितनी साइड्स होती हैं बैलेंस शीट में? There are students two sides. Number one liability side. Liability and asset side. हाँ बेटा. Try to start preparing balance sheet from liability side. ठीक है, liability side में कुछ आइटम्स जो है ना कम होते हैं बेटे. ओके. Yes sir. So first item will be creditors. As it आप लोगों के पास उसमें दे ही रखे हैं creditors की वैल्यू कितनी है 18,920. After that outstanding salaries. So बेटे outstanding salaries value is 5,720. Now see in the question capital was given of 1 lakh. ठीक है, and net profit was 16,060. We will add it. And interest on capital जो था ना हमारा trading में PL में गया था, PL में हम लोगों ने interest on capital transfer किया है नहीं किया है? क्यों सूरज? Yes sir. PL में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर किया था नहीं किया था? नहीं किया है, देख लो एक बार. हाँ, we have transferred here interest on capital and now we have to sum up it in the balance sheet in capital. ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आप इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, आ रही बात समझ में? म्यूट योरसेल्फ. ओके. So interest on capital ऐड कर देंगे तो total amount will be 1,21,060, right? And now what we have to subtract next item from this capital? Capital से next item कौन सा है जो माइनस करना होगा? Drawing. So final amount of this capital will be how much? 1,03,460. Is it clear? ये 1,03,000 समझ में आ गया सभी को? Yes sir. ओके. नाउ कम अप टू एसेट साइड. कैश एट बैंक आपको पता ही है एसेट साइड आएगा, कैश इन हैंड आएगा. आफ्टर दैट बिल रिसीवेबल. ओके. नाउ हाउ विल यू डील विद डेब्टर्स? कोई बच्चा बताएगा डेब्टर्स में सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्रॉम ट्रायल बैलेंस यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ डेब्टर्स. ठीक बेटे. आफ्टर दैट वॉट एवर फर्दर बैड डेब्ट्स आर गिवन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्दर बैड डेब्ट्स. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट न्यू प्रोविजन. क्या करना होगा आपको? न्यू प्रोविजन माइनस कर देना है. तो वॉट एवर रिमेनिंग वैल्यू इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके. Yes sir. आफ्टर दिस यू हैव टू राइट एक्रूड रेंट. ठीक है, एक्रूड रेंट था हमारा 200 रुपए रेंट में. एक्रूड कोई भी इनकम हमारी होती है दैट इज अवर असेट्स. सो वी विल रिकॉर्ड इट इन असेट साइड 200. ओके. आफ्टर दिस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज आवर प्रीपेड एक्सपेंस. सो ये भी हमारा असेट्स हो जाएगा असेट साइड. बिल्डिंग ऑलरेडी पता है और बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन 625 का डेप्रिसिएशन लगा है आप वो माइनस कर देंगे. तो फाइनल अमाउंट इज 6,860 दैट विल रिटेन. यस बेटा. आफ्टर दिस furniture is next item. What is furniture? Furniture's costing is 3,500 and appreciation of furniture is 175. तो इस 175 को हम लोग माइनस कर देंगे. 3,325. 3,300. No sir, 3,325. Sir, 3,325. Yes beta. Okay. And after that closing stock was given that is 14,290. Now whenever you will sum up both the sides of this balance sheet and both the sides become equal. ठीक है, दोनों साइड का जो सम है वो आपका बेटा इक्वल आ जाएगा. 1,22,950. यस बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा कंप्लीटली? Yes sir. Yes sir. बस दो ही बच्चों को है. Yes sir. Yes sir. Okay. So note down this balance sheet.
Pranjal Purvar, what about you? Are you getting now? Oh, no, yes, sir, I am getting. Very good. After this, beta, next lecture is balance sheet. Oh, sorry. Next question is that is similar to this question. उसमें भी हमारा adjustment से related items हैं. This is the following information have been extracted from trial balance of Mr. Randhir Transport Corporation. ठीक है, Yes, आपके sir. पास डेबिट बैलेंस दिए हैं, क्रेडिट भी दिए हुए हैं. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बैलेंस शीट, डीएल अकाउंट, ऑल द थिंग्स. कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? And these are the adjustments related to this question. How many of you So can which do? question is this? This is illustration. I think 4, 5. 4. Might be 4. Fifth. Might be 5th. 5. See in your books, Wait, it wait. will be different. Some books it is a question. Okay. So again, problem is coming. Who have unmuted themselves? Abhishek, Swati, it is in your phone, I think, problem. So, beta, how many can you prepare trading account? Raise your hands only. Don't say yes, yes. Immediately raise hands. See question from the screen. I'm showing on screen. Only 5 students can prepare. Who is this FCFF? Okay, start preparing. Hello. Ishita, you cannot prepare, beta. Muskan, you also? So yes, sir, I can prepare. Yes, So for beta? this question you have to prepare, na? Okay, I sir. am showing this question, whatever I'm showing on the screen. इसका जरा start preparing trading account immediately. क्वेश्चन है, इसके आगे ही इसके एडजस्टमेंट्स हैं. Noted everyone? ट्रेडिंग किस किस का बन गया इस क्वेश्चन का? What will be the first item that comes in trading account? Opening stock. Opening stock. What is the value of opening stock? 40,000. 40,000. After this, what is the second item? That is Purchase. purchases. The purchase return is not given. Write directly purchases. Wages. After this, wages are given of 4,500 and 100 is outstanding. So you will write 4,600. Okay. After this, power is given 3,500. Right. Now come to credit side. You have to write sales and you have to subtract sales return. इसमें दे रखा है तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे. So this will be 1,47,500. Okay. And closing stock is 35,500. Right. So now sum of this credit side of trading account. Credit side का आप sum कर दीजिए. Right. And debit का भी कर दीजिए. Subtract credit debit from credit and finally you will get a gross profit that will be 59,900. Am I correct? Yes, ठीक है. After this you have to write all indirect expenses here in debit side. ठीक है. Immediately take screenshot of this screen. इसका आप screenshot ले लीजिए. ठीक है. And transfer all entries in debit side related to expenses which are indirect in debit side of profit and loss account. Okay. And income will be recorded in credit side. After that the sum of credit side will be greater. It will be 65,200 and you have to transfer debit side sum and finally net profit you will get that will be 10,217. Is it clear? Yes, sir. Any student want to ask any problem? No, sir. I think everybody can prepare balance sheet of this question, huh? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम आएगी बैलेंस शीट बनाने में? Honestly raise No, hand. sir. Problem in preparing balance sheet. Who is using this device F5C666? Speak beta. You have unmuted yourself also. What is your name?
yes, speak. F5C 64A4 कौन है ये? 64A4. Speak your name. How may I call you? Sir, I think Akash. अच्छा, Akash is this. Okay. Soumya, any problem in both these questions? Both the questions, whatever we have discussed now? No, sir. Okay. Now are you getting this chapter? Yes, sir. Okay, beta. So Yes, class is sir. over now. Now if somebody is having problem, then tell me. I'm here. अगर कुछ पूछना है किसी को पूछ लीजिए. प्रॉब्लम आ रही हो इस चैप्टर में, किसी एडजस्टमेंट में समझ में ना आ रहा हो? No, sir. All are satisfied? Yes, sir. Sher Singh. Yes, beta, you have raised hand. Any problem you have? No, sir. Okay, beta. Vandita, Suraj, Pranjal, Muskan. Anything you want to ask? No problem, sir. Okay, beta. So in homework now you have to solve all the questions of this next whatever chapter financial adjustment is going on na? All the questions. I think most of the questions we have discussed, and from tomorrow we will discuss some questions from side book also. Okay, I will show you question on screen. After that we will solve. Okay. Sir, don't give all questions. What? Nothing, sir. Okay, beta. Economic review.